हेलो फ्रेंड्स। सो मिररिंग पार्ट वन हमने कंप्लीट की थी। इसमें मिररिंग के कुछ डिफिनीशंस, कीवर्ड्स और ऑपरेटिंग मोड्स देखा था हमने। एंड नाउ हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में कुछ अगर नहीं देखा तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देंगे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यहाँ पे। सो उसके लिए हमें एस ओपन करने की ज़रूरत है एंड देन वी कैन कनेक्ट द डेटाबेसेस एंड ऑल, एंड देन हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली हमने करके रखा था लास्ट टाइम, हमने जो फर्स्ट पार्ट में की थी। एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। एक बार हम मॉनिटरिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब भी सिस्टम अप होती है वो चलने लगता है। सो ये सेकेंडरी है, मीन्स रेप्लिक मिरर सर्वर है, और ये आपका प्रिंसिपल सर्वर है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये सिंक्रोनाइज्ड है और इट्स showing good. You can check here monitoring status. Okay, so monitoring status हम यहाँ देख सकते हैं। तो सी हियर इट इज शोइंग सिंक्रोनाइज एंड सिंक्रोनाइज। ओके, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल लॉग है, यहाँ पे मिरर लॉग है। ओके, मिरर ओवर कमिट 0 मिली सेकेंड एंड ऑपरेटिंग मोड क्या है, हाई सेफ्टी विथ ऑटोमेटिक विदाउट फेल ओवर, बिकॉज वी डोंट हैव विटनेस सर्वर। विटनेस सर्वर अगर होता तो ये ऑटोमेटिक फेल ओवर में जाता था। ठीक है। सो ये आपका मॉनिटरिंग यहाँ से हो रहा है। ठीक है, you can see that everything is cool here. Just we can see that mirror server and all. See the status, I think. Okay, आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपको, सॉरी, मिररिंग इम्प्लीमेंटेशन में आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट आपके पास पहले से ही है, ये हम सेकेंड पार्ट में है। सेकेंड पार्ट में जो मिसिंग चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो आगे आपको हेल्प करेगा। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द पीपीटी, एंड हमने कहाँ तक देखा था पीपीटी में वो भी हम देख लेते हैं। हमने देखा था सो क्यूए पार्ट बाकी है। ओके, सो क्यूए पार्ट में हम आते हैं, हम इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मिररिंग स्टेटस कौन कौन से होते हैं। ओके, व्हाट आर द मिररिंग पॉसिबल स्टेट्स। ओके, सो पहले हम देखते हैं स्टेटस डिस्प्ले बाय द डेटा इज मिररिंग इन मॉनिटरिंग। सो आप जो हमने अभी ये डैशबोर्ड देखा था इसकी हम डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। सी ये जो डैशबोर्ड है आपका, इसमें जो भी आप इसके बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, क्या है। ओके, सो यहाँ पे देख लो करेंट सेंड रेट है, करेंट सेट न्यूज़, न्यू ट्रांजेक्शन्स हैं। सो हमने कुछ किया नहीं, अगर हम करेंगे तो हम देख सकते हैं। मेरे लिए कम टू द पॉइंट लेटेस्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए, सो कम टू द मिरर सर्वर एंड जस्ट लेट्स क्रिएट सम डेटा इनसाइड। ओके, कुछ स्क्रिप्ट बना के रखे थे टेम्परेरी के लिए, लेकिन हम उसको हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम हियर db mirroring. Okay, and now I am replacing this, or we can say पर्सनल आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी नेम। ओके, सो हम ये कर सकते हैं इन्फो टेबल। ओके, एंड यहाँ रिप्लेस करते हैं सब इन्फो टेबल को, सॉरी इन्फो टेबल। यहाँ भी हम रिप्लेस करेंगे इन्फो टेबल से। ओके, एंड यहाँ भी रिप्लेस करेंगे इन्फो टेबल से। क्यों? क्योंकि टेबल का स्क्रिप्ट दूसरे का था, डिफरेंट टेबल्स का था, तो हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे TLSQL हमने जो लिखा है क्रिएट करने के लिए टेबल का, डेटा टाइप है प्राइमरी की एंड फॉरेन की, सॉरी नॉट फॉरेन की, जैसे प्राइमरी की, वन सीडिंग ऑन। सो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स क्रिएट वन ट्रांजेक्शन। ओके, एंड कम टू द मॉनिटर पार्ट, सॉरी दिस मॉनिटर पार्ट। सो हम यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने ट्रांजेक्शन्स मूव हो रहे हैं। ठीक है, पर सेकेंड, लेकिन अभी हम तो से कर नहीं रहे हैं तो यहाँ दिखाई नहीं देने वाला है। हमें फ्रीक्वेंटली नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ा करके करने पड़ते हैं। ठीक है, सो हम सेलेक्ट कर सकते हैं भाई इन्फो टेबल। वाई, सॉरी वी क्रिएटेड हैश इन्फो।
sorry, create this. Okay, and now we can select. So we have blank table. See here, personal ID we don't have, name, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सिटी नेम. सो हमें ऐसे यहाँ पे इंसर्ट करने हैं. हम यहाँ से 4 रो इंसर्ट कर रहे हैं. हमें 4 आईडीज़ में जनरेट हो जाएंगे, 1 to 4 हो जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, 4 हो गई यहाँ पे, आप देख सकते हैं. ओके, एंड यहाँ पे आपकी पाई, यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं, 26 20. ओके, सो आई थिंक वो मूव हो गया होगा यहाँ पे. ठीक है, रिस्टोरिंग मोड में है, तो जब हम फेल ओवर करेंगे तो पता चलेगा. ठीक है, वो भी हम चेक कर लेंगे मैनुअल फेल ओवर करके. ओके, सो हमने क्या किया, 4 रो इंसर्ट किया. आप सी यहाँ से देख सकते हो. ओके, 4 रो इंसर्ट हो गया. अब हम यहाँ क्या करते हैं, रोल चेंज करते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई एंड चेंजिंग द रोल. कैसे चेंज करेंगे रोल, यहाँ पे हम मिररिंग में आएंगे. सॉरी, डेटा प्रॉपर्टीज़ एंड यहाँ मिररिंग. यहाँ पे देखो आप, फेल ओवर करनी है हमें. ठीक है, हम फेल ओवर टेस्टिंग कर रहे हैं. ठीक है, सो क्लिक ऑन फेल ओवर. ठीक है, ये वार्निंग आपको दे रहा है ऑन फेल ओवर. ओके, क्लोजिंग ऑल कनेक्शंस ऑन प्रिंसिपल. सो पहले हम ये कनेक्शंस क्लोज कर देते हैं. ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं. पहले सेव, यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल सर्वर. ठीक है, and now it's close, or we can just okay close, come to the point here. Yes, now it will changing here role. Basically just refresh here. See, refreshing. See, प्रिंसिपल सर्वर एंड मिरर सर्वर. सी, चेंज हो गए. यहाँ पे जो सेकेंडरी थे, जो मिरर सर्वर थे, वो प्राइम प्रिंसिपल हो गए. प्राइमरी सर्वर, प्रिंसिपल सर्वर, मिरर हो गए. नाउ यहाँ हम रिफ्रेश करेंगे. अब सेम टाइम पे जस्ट रिफ्रेश दिस वन. सी हियर रिस्टोरिंग मोड. एंड नाउ यहाँ पर रिफ्रेश करो आप इस चीज़ को. देखो आप, ये प्रिंसिपल हो जाएगा अभी. सी, दिस इज़ अ प्रिंसिपल सर्वर. ओके, नाउ जब प्रिंसिपल हो गया तो हमें अब वही स्टेटमेंट यहाँ रन करनी है सिलेक्ट के लिए. तो हम कंट्रोल ओपन करेंगे. हमने बनाया था क्या, टेबल. जस्ट अभी हमने टेबल बनाई थी. जस्ट ओपन दिस, और हमने बनाई थी ये टेबल. ठीक है, इसमें हमने 4 रो इंसर्ट किया था. यहाँ राइट हुआ है कि नहीं हुआ है. सी, मीन्स ये ट्रांजेक्शन यहाँ मूव ही नहीं हुआ है. समझे, ये ट्रांजेक्शन यहाँ मूव ही नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, डेटा लॉस में चला गया. समझे, यहाँ आया ही नहीं. ओके, अब एरर हमें एक देखना है यहाँ पे एरर कि अभी तो यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट पहले से बना हुआ है, ये टेबल इन्फो टेबल, और यहाँ नहीं है. तो हम इसको भी क्या करते हैं, फेल ओवर करते हैं और देखते हैं क्या एरर आता है. ठीक है, एरर क्या आएगा, मे बी दैट इज़ नॉट सिंक. सबको पता है. तो पहले हम कनेक्शन डिस्क्लोज कर देते हैं. पहले सॉरी, क्लोज. नाउ कमिंग टू द नाउ न्यू प्रिंसिपल सर्वर और कम टू द टास्क मिरर. एंड नाउ अब हमें इसको फेल ओवर करना है फिर से. यस, ट्राई दिस. सी, sorry, this is different one. Refresh this. ओके, एंड इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं. एंड नाउ अब ये क्या हो गया होगा, रिस्टोरिंग मोड में. लेकिन हमें जो एरर का एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारी टेबल बनी है एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ टेबल वो नहीं है, मतलब वो सिंक नहीं हुआ. सी, द इन्फो टेबल हमें यहाँ मिली, 4 रिकॉर्ड वहाँ नहीं मिली. मतलब डेटा जो है ये रिस्टोर नहीं हुआ. और ये क्या है, कौन से मोड में था ये, ऑपरेटिंग विदाउट ऑटोमेटिक फेल ओवर. समझ में आ रहा है, सिंक्रोनाइज है विदाउट ऑटोमेटिक फेल ओवर है. इसमें डेटा लॉस होगा, मीन्स ये एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहा था, एक्नॉलेजमेंट मिली नहीं थी वहाँ पे. ठीक है, तब तक हमने फेल ओवर मार दी. सो हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है. एक बार और हम क्या करते हैं, इस चीज़ को फिर से क्रिएट करते हैं एक और टेबल. और वेट करते हैं थोड़े से टाइम के लिए. ठीक है, हम
info अंडरस्कोर m, ठीक है। हमने ये क्रिएट कर दी। कहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं आप देख लो, सर्वर कौन सी है ये, डीबी मिरर नीचे वाला प्राइमरी पे हम कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर्वर पे हम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रिएट हो गया। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे ये है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, ओके। सब सही चल रहा है, रिफ्रेश हो गया, ऑटोमेटिक रिफ्रेश है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एंड नाउ अभी हम क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा इसमें ना बल्क इंसर्ट की तरह हम काम करेंगे, ठीक है। इसको हम मल्टीपल टाइम्स चलाएंगे, ठीक है, डन। और थोड़ा देर हम देखते हैं कि ये डेटा उधर मूव हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट के लिए आता है कि नहीं, और इसका मॉनिटरिंग भी हम कर सकते हैं, जो आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम हमने दिखाया था। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम sys डॉट sys डॉट डेटा बेस अंडरस्कोर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, यस मॉनिटरिंग, ठीक है। एंड पॉइंट है लेसन दिस वन, ठीक है। कनेक्शन टाइम और 10, और ये आपका लेसन है, ठीक है। अब यही चीज़ हम विटनेस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, सो हम मॉनिटरिंग कर रहे थे अभी, तो ये हमारा प्रिंसिपल सर्वर है, एलएसएन आप देख सकते हैं, ठीक है। मिररिंग एन टू लॉग एलएसएन, ठीक है। रेप्लिकेशन एलएसएन सी ईयर, सो यही चीज़ हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं। सो सेम मतलब डेटा भी सिंक हो चुका है, ओके। एंड आप स्टेटस देख सकते हैं, मिररिंग का क्या है, रोल क्या है, मिरर है, स्टेट क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। तो हम अभी यही चीज़ यहाँ पीपीटी में देख रहे थे कि मिररिंग का स्टेट क्या हो सकता है, अननोन, सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइज, सस्पेंडेड, डिस्कनेक्टेड, विटनेस, कनेक्शंस, ओके। ये आपका मिररिंग स्टेट हो सकता है। तो हमने यहाँ कमांड से ही चीज़ देखा, ठीक है। ये क्या मिररिंग स्टेट क्या है इसका, सिंक्रोनाइज है, ओके। स्टेट आईडी क्या है, 4 है, सो आप इसे भी यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, सॉरी ये तो मतलब नंबरिंग हमने नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड है यहाँ से इस तरह से। नाउ यहाँ भी आप देख सकते हैं ये वार्निंग्स है, तो वार्निंग्स के लिए हम वार्निंग सेट कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, नॉट इनेबल है ऑन द बोथ द सर्वर्स, प्रिंसिपल सर्वर और ये मिरर सर्वर। हम चाहे तो थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट रनिंग है ये सब चीज़ें। वार्निंग का क्या है, केबी में डेटा है, ठीक है। और क्या मिनट है इसका, थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ रखा हुआ है। सो हम थ्रेशोल्ड वैल्यू भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे खुद से, ठीक है। इनेबल डिजेबल हम कर सकते हैं जो वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। कितने मिनट ये ओल्डेस्ट डेटा जो है यूजर्स का, ट्रांजेक्शन्स का, सी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। चाहिए तो मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखा देता है यहाँ पे। ओके, एंड नाउ you can check, so these are the threshold value। तो क्या है, इफ़ वार्निंग अनसेंट, सो ये वार्निंग देगा अगर एक पेज नहीं सेट किया है, तो आप सेट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट 0 रहता है, ओके। अनरिस्टोर्ड है तो भी मिलेगा हमारे पास। ओल्डेस्ट एज लंबा टाइम हो गया तो भी सेट करना, 1 मिनट ज़्यादा हो गया तो भी हमें अलर्ट सेट करना चाहिए, 0 रखा हुआ है। मिरर पे कमिटिंग एक्सीड हो जाता है तो भी इतने मिली सेकेंड तक नहीं होता है, तो हम ये अलर्ट सेंड कर सकते हैं। अगर हम कोई अलर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम ये बना सकते हैं, तो ये अलर्ट हमें सेंड कर देगा, ओके। सो ये अलर्टिंग सिस्टम है। वार्निंग
थ्रेशोल्ड वैल्यूज। ओके, और यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हैं, ठीक है। मिररिंग स्टेटस क्या है, सिंक्रोनाइज दोनों का है, ठीक है। रोल क्या है, प्रिंसिपल एंड मिरर सर्वर। इंस्टेंस नेम है यहाँ पे, इसके लॉग्स हैं, यहाँ प्रिंसिपल के लॉग्स हैं, ये मिरर के लॉग्स हैं। और यहाँ पे कमिटेड ओवर, ओके। एंड विटनेस यहाँ पे एडेड नहीं, तो विटनेस का कुछ डिटेल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपकी मॉनिटरिंग है, एंड मॉनिटरिंग के लिए ये स्टेट हमें पता होना चाहिए। So we are discussing about this status display by the mirroring monitor. So mirroring monitors में ये सारी चीज़ें आपके पास है। इंस्टेंस नेम है स्टेटस में, करेंट रोल है, मिररिंग स्टेटस है, विटनेस कनेक्शन डिटेल्स है यहाँ पे, प्रिंसिपल लॉग, मिरर लॉग, कमिट ओवरहेड और ट्रांजेक्शन रिस्टोर, ओके, विटनेस डिटेल्स हियर, और ऑपरेटिंग मोड. So here we are just discussing about this what status page will provide us, that is status page of the data mirroring monitor describe the partners and state of the mirroring sessions. It includes information metrics such as state of the transaction log and other information that is attendant to help currently estimate the time required to complete a failover and the potential of data loss if the session is not synchronized. In addition, the status page displays status and information about the mirroring session general. Okay, the display it displays the information for each partners like instance server, that is name server of whose status is okay, and current server roles, just so instance name is that principal, and we can say that mirror server name, instance name, and the role, that is principal or mirror. So and next is a mirror states, that is unknown, synchronizing, synchronized, suspended, or disconnected, witness. Okay, and the connection state of witness server also here, unknown, known, connected, disconnected. Okay, so this is about this mirroring dashboard status. Okay, this is about this only. Okay, so I think hope you understand about that mirroring and how to monitor and failover and maintain and monitoring. So this is database mirroring monitor details. Okay, every see refreshing every time. Okay, few seconds, we can say that. And we also check the transactions here, so you can see here all the details we have checked it. Okay, so now we have done data entry, and now we are just going to change the server roles. See here. Okay, currently see that this is a principal server. Now we are going to do failover again. Okay, just right click, task, mirroring. Okay, and now we are going to do a failover here. This is a manual failover. Okay, not automatic. For automatic failover we need a witness server. Connect all the sessions. Yeah, now just refresh. I think now the role will be changed. Okay, and here we have to refresh, but in monitor dashboard, see, automatically change here. See, the principal server is mirror, a mirror server is a principal. See the details here. Okay, now on mirror server we have to just check that the table which we have created info m. Okay, and info also here. See, both tables come here, and that is replicated or shared. See, but in m we have inserted many rows basically. See, we have executed many times. See, so we have got this one. So means data, no data loss basically, but we have to just check in monitor this is synchronized or not synchronized, then we can do that. Okay, so we've tested all these things, so most of the things we have done in mirroring. Okay, now after doing this mirroring, now there is couple of interview questions we are going to see that. So just keeping that in mind. Okay, now keeping that in mind,
coming to the ppt page. Okay, so this is about the monitoring and doing failover of mirroring. Now let's see the law about the log on to the principal server. Okay, so display page, how can you check that? So this is only about this this page only. Okay, so this window. Okay, principal log, what is unsend, old and all we have already discussed, but yeah, we can do here details. So unsend log, what is unsend log? So amount of log waiting for sending in the queue, kb. Old unsent transaction, age of the old sent transaction is sent in queue. The age of this transaction indicates how many minutes of transaction have not been sent to the mirror server instance, or we can say the server. This value help ensure the potential of data loss in the term of time. So agar say is not sent, then it will generate data loss. Time to send log, estimated time, basically estimated number of minutes to principal server instance required to the send the log to the current in the sent queue mirror server instance based on current send rate. The actual time to send the log will affect by the rate of incoming transaction, which can be vary significantly. However, the time to send the log value can be usually a roughly estimated time to require a manual failover. See here. Okay, time to send log, but here not. Okay, next is current send rate, current set of transaction being sent to the mirrored instance in kb per second. Okay, see here 0 kb per second. Okay, the current rate of new transactions, the rate at which the transaction are being in entered into the principal log in a kb per second to determine whether mirroring is falling behind, staying up, or catching up. Compare the value estimated sent to the send log value. So it is totally about this principal log window only. Okay, so how the parameters, how this is essential or required before doing any failover or while we are monitoring the principal server. This is about the principal server log. Okay, now coming to the next, that is mirror log. Okay, so now coming to the mirror server log. So in mirror log server we have to just keep eye on that unrestored log, time to restore log, or current restore rate. So this is the window here, or you can see in this area. Okay, so this is the area where we have to just focus. Okay, so unrestored means the amount of log waiting to redo queue in kb. Okay, time to restore log estimated, approximate number of minutes required to log currently in the redo queue to be applied on the mirror databases. Current restore rate, the rate which transactions are being restored into the mirror databases per kb per second. Okay, so this is about the mirror log server. Next, coming to the mirroring sessions. So mirroring session is here. You can see that mirroring commit over, this is mirroring sessions, mirroring commit over, time sent to restore all current logs, witness address and operating modes. So now, so mirroring session kya, that is in, we can see in mirroring session, that is mirror commit overhead, that is average delay per transaction in milliseconds. This delay in the amount is the amount of overhead incurred while the principal server wait for the mirror server instance write transaction log record to the redo queue. And time to send restore all the logs, the estimated time needed to send all the unsend log that has been committed to the principals and restore all the log currently in the redo log. This estimate may be less than
the sum of values of the time to send log and time to restore fields, because sending and restoring can operate in parallel. Witness address, the network address of the witness server. Operating mode in mirroring, basically. So high performance, that is asynchronous. High safety without automatic failover, synchronize. High safety with automatic failover, synchronize means we need a witness server. So this is about total about monitoring of mirroring, okay, or mirror server, witness server, or principal server. Now here is some metadata, or we can say that system views, or system, we can say that materialized view, we can say that, or dmb. Okay, so we can see system database which provide you display each mirroring database instances. Okay, so we have already fired here to see that one. Okay, this we've checked that one, and now it is also we can check from the synchronized endpoint, you can say here. So you can check also select strict from sys dot database, sorry, underscore mirroring endpoint, see here. So you can check the endpoints at whatever the endpoints. Okay, started, partner role, negotiation, okay, tcp ip port, endpoint id, principal id. Same you can check on mirror server also. So just execute here, see. Okay, next is about mirroring witness. If we have witness but we don't have witness, so we cannot get data here, but let's mirroring witness. No, database mirroring witness, that is the name. Database mirroring underscore witnesses. Okay, so we don't have any witness, so we not get any detail about the witness server. Okay, next is dmb, so we can check the connections and all. So here mirroring connections, we have to just write here sys dot dm underscore db underscore mirroring, not database db here. Okay, mirroring connections. Okay, so see here the connections. Okay, username, remote username and all, both is online here because we are online. Okay, packet receiving calls here, you can get all the details here. I see either the endpoint id and all. So this is whole about database mirroring. We have done totally database mirroring and all. Okay, coming forward for monitoring purpose, so the possible stats of and their associate icon in database mirroring. So warning icon unknown, the mirroring is not connected to either partner, the only available information is out cached by monitoring. Warning icon is status is synchronizing, means the current the contents of mirroring database are lagging behind the contents of principal database. The principal server instance is sending log record to the mirrors instance, which is applying change to the mirror database roll it forward. At the start of database mirroring session, the principal server are in the state. Okay, synchronizing state. Okay, what is synchronizing? Like a standard database cylinder means synchronize. We can see the icon basically here.
Let's see the icon. This is in synchronizing, and synchronize icon also we can see here. No, okay, standard cylinder, but this is synchronized. Okay, and so when the mirroring which when the mirror server became sufficient code of the principal server, the data set changed to synchronize, means all the data mostly sent to that mirror server. So it's say like synchronize, the data is remain in the state of logon as the principal server continues sending changes to the mirror database server, and the mirror server continue to applying change to the mirror databases. For high safety mode, automatic failover and manual for both possible without any data loss. High performance mode, some data loss is always possible, even synchronized. Okay, because it is not waiting for acknowledgement or restoring the data from principal to mirror server. Warning is suspended, the principal data is available but not sending log to the mirror database. Icon disconnected, database not connected to the partner. So these are the monitoring part. Okay, next monitoring part is some other action menu of data mirroring monitor, that is register monitor mirror databases, manage instance connections. Okay, and so what is about this? Basically, like registered mirror database means dialog box that used for registering one or more mirror databases to given server, adding a databases database mirror monitor. When a database is added, monitoring colloquially cache information about the database partners and how to connect partners. So here we can see that, okay, like see register database mirror. See, this icon is about the register database. You can click here to register here. Okay, so it is totally about this instances and all. So you can connect here. See, this is already here connected as a partner as, or second one you can also connect. So okay, so it will show the dialog box and all. So it is just about this window, register database mirror. Okay, this one. Next is manage instance. When the connection command manage connections, that there can also choose instance for which specify credentials and monitor use connections given partners. So these are all about this dialog box only. Okay, this dialog box only. Then the same way we can unregistered, we can select and unregister as well. Okay, so circles of manager dialogs box here. So you just click OK. You can see here you can just manage server instance connection. So this window, so you can just edit and remove. You can also just select and you can remove, means you can deregister the servers. Okay, nothing else. So this is totally about this window. Okay, registered or unregistered the server, so removing databases and all. So this is totally about the monitoring part. Okay, the monitor window. Next is the summary and the history of database, or we can say that recap or a snap of databases mirroring. So whatever we have done here now, all the keywords is here. We can just check the history of that database mirroring. So time recording, timestamp of the history now, role, the current mirroring role of the instances like principal and mirror. Mirroring states, what are the states? Like disconnected, pending failover, suspended, synchronizing, unknown. Witness connection, this is about the witness connection of databases, connected or disconnected.
Unsend log, the size in KB, that is unsend log to the queue in the principal server instances. Time sent, time to send means the log sent to the mirror server. So this is approximate time from the principal instance. This is will require to send log to the currently in the send queue to the mirror server instances. Send rate, the rate at which transactions are being sent to the mirror database server in KB per second. New transaction rate, rate at which incoming transactions are being entered into the principal log in a KB per second. To determine whether mirroring is falling behind, staying up and catching up, compare the value of the time to send value. Old unsent transaction. Age of the old unsent transaction is sent queue. The age of transaction indicate how many minutes of transaction have not yet been sent to the mirror server. The value helps measure to potential of data loss in the term of time. Unrestored log, the amount of log waiting for redo queue in the redo queue, okay, in KB. Time to restore, approximate number of time required for the log currently the redo queue to apply on the mirror database. Restore rate, rate which transaction are being restored, mirroring per second, okay. And mirror commit overhead, average delay per transaction in millisecond. This delay is amount of overhead incurred while the principal server instance wait for the mirror server instance to write a transaction log required, so record into the redo log. So these are totally about the mirroring, okay, mirroring monitoring. So keep in mind all these things, the keywords and the values, okay. So that will help you in troubleshooting. So please do not forget to like, comment, subscribe, because it will help us, okay. And if you like all these things, know all these things, just like. If you not know before this video, then you can just comment and all, and share to the friend circle, okay. And we will come for that QA session last in next session basically, okay. So thank you for watching. We have covered most of the things in this session about the mirroring monitoring, failover and all, okay. So thank you for watching. Do not forget to share, subscribe and comment. Thank you. So this is about totally about monitoring, okay. Thank you for watching.